Ji, welcome back to Game On Hai. We're building up to the ICC Men's T20 World Cup 2024. You will be able to catch all the action live only on PTV Sports. ब्रेक से पहले बात कर रहे थे ऑफ कोर्स कुछ पुरानी मेमोरीज की. ऑफ कोर्स हमने 2009 वर्ल्ड कप को थोड़ा देखा, 2022 वर्ल्ड कप को देखा, पाकिस्तान की लॉस इन द फाइनल. तो थोड़ा सा रिकैप हमने किया है. इट्स टाइम नाउ टू लुक अहेड at what to expect from that first game between the USA and Canada. Martin Guptill, we will talk in detail about all of the explosive batting power that all of these teams possess. But speaking of Canada in particular, they've had a good warm-up game. They beat Nepal, and now they have the likes of some really key players like Aaron Johnson with that strike rate. What do you make of the Canadian team, and how much of a threat do you think they can be to the USA? Yeah, I don't know too much about them, to be honest, but from what I've been reading and things, Aaron Johnson is quite a big player for them. If he can get away at the top of the order, then their innings gets a lot of momentum and they can really build on that. Obviously, he averages 50 in T20 cricket and strikes at 166, I think it is. So, that's some pretty decent stats for an opening batter, and can get the team off to a really good start. They've just got to hope that he can get off to a flying start, and then they can build an innings around that, and guys can then pitch in and help out and create partnerships to score big runs. That's how, if you can create partnerships, that's how you score big runs, how you set big totals, that's how you chase big totals. So if they can do that, they have a pretty good day out. And they've got their own league as well now. We've had a few seasons of the GT20 in Canada. We've got some big players as well. Some time with some big internationals, which obviously would have been wonderful for them in growing their game. And Saad bin Zafar, who's been the captain for a long time for Canada and has been popping up in some of these T20 leagues all over the world. They have guys that are, putting their foot forward on the international front, and you just never know with some of these countries, and T20 is the format to do it in, isn't it, to have an upset? Oh, 100%. I think the closer you bring the games together, the shorter the format, the closer the teams come together. We've seen some big upsets in different tournaments over the years. Obviously, you look at the Netherlands beating South Africa at the last World Cup. I don't think anyone ever saw that coming, but it can happen anywhere. And they've just played a 5-match series, and Canada and the USA have played a 5-match series recently. USA came out on top of that 4-0. I think they had one washout, but that's been and done. This is a new series, a new tournament, a new set of games. So anything can happen from now. A one-off game, when the pressure really builds and really gets on you, anything can happen. So it's really up in the air who wins this one. I can't really pick it for this first game. There's nothing like the fire in the belly of a T20 World Cup to really get the competitive juices flowing and to pull a performance out of the hat. But when we look at the USA taking on Canada, I mean, the professor, he knows everything about everything. I'm going to come to you about expectations on this game. But, USA, a lot of former internationals for other countries. We spoke about Corey Anderson a little bit earlier of New Zealand fame. He certainly knows a thing or two about World Cups. Andres House as well from South Africa, now playing for the USA. Harmeet Singh, he was part of the T20 Under-19 World Cup side. They've got talent in their ranks, and they're the home side. What can they do in Dallas? Well, I personally feel US got a very good balance because, the recently series they played against Bangladesh, they beaten them. So Bangladesh is the team who's playing this cricket at international level from the last couple of decades. So if you beat them, you give them a very good chance to do well as a host country. And I think ICC done a fantastic job to promote cricket in US. In the last couple of years, they brought some of the international leagues there. MLC was there, and then US T10, we all played there. So I personally feel like they given a fair amount of cricket before they introduced this mega event to the US, and I think it's a great push for them, especially as a US team, because the home crowd I personally want. I know the rivalry will always be there, Canada and US, but I personally feel the crowd I would like to see more in US matches, not against like in India, Pakistan matches, but if the crowd will come for the US game, that will be good for the team. And because I feel ICC wants all the crowds to support US at the moment. And you'll know this because you know everything as the professor, but how about the fact that in 1844, these two countries actually played cricket against each other long before the Ashes, long before Australia, England. In terms of rivalries, this goes back
hundreds of years. Like to think that this is now the curtain raiser for this edition of the T20 World Cup. Like how cool is that? I don't know about the history that much, but I still believe this will give a great chance to the US because this is a massive market for the sports. So if cricket will do well, especially the US team will do well, if they can win 1 or 2 games, that will definitely push them a little bit more towards the sponsorship. So I personally would like US to do well. To be very honest, like I'm not taking things away from Canada, but because this game is in US, so I want US to do well because the more the fan will be engaged with the wins, it will be good for the cricket moving forward. First prediction, Roha. There we go. But speaking of predictions, Yunus, दोनों टीम्स की बैलेंस के ऊपर भी हम अभी मजीद बात करेंगे और फिर जैसे हम मैच देखेंगे थोड़ा बेहतर आइडिया होगा सब टीम्स का. लेकिन गोइंग इनटू दिस मैच, एक तो ये ओपनर है, पहली गेम है, दोनों टीम्स के ऊपर प्रेशर भी होगा. वर्ल्ड कप दोनों टीम्स पहली बार खेल रही हैं, उसका भी प्रेशर होगा. और फिर होम टीम यूएस है, अपना होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस हैं. कितना बड़ा है इन दोनों टीम्स के लिए ये मौका और व्हाट डज दिस मीन, ये कहाँ लेके जाएगा इन दोनों कंट्रीज़ की क्रिकेट को? देखिए, हमने यहाँ पे बात की, हमारे पैनल ने बात की कि देखिए कनाडा के क्रिकेट की बात करें तो वहाँ लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं. उसके बाद यूएस की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है. और ये दोनों एक ऐसी मार्केट्स हैं जिसको फॉर सम हाउ आईसीसी ने से पहले जो ना टच नहीं किया हुआ था. और अब हम देख रहे हैं कि वहाँ भी लीग्स हो रही हैं, यहाँ भी लीग्स हो रही हैं. और हम एक और देख रहे हैं कि यहाँ अब जो लोकल प्लेयर्स हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात, श्रीलंकन की बात नहीं कर रहे हैं. वहाँ हम देख रहे हैं कि वहाँ अब कुछ प्लेयर्स भी नज़र आ रहे हैं. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि ये क्रिकेट जो है अब एक ग्लोबल स्पोर्ट्स हो गया है. इससे पहले हम सॉकर की बात करते थे कि सॉकर इज़ लाइक कि उसकी 2-3 सदियों की हिस्ट्री है, क्रिकेट की इतनी ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है. लेकिन अब हमें ये लग रहा है कि अब जो सबसे ज़्यादा ग्रोइंग स्पोर्ट्स है वो है क्रिकेट और दुनिया के हर कोने में हो रही है. तो क्यों यूएस, क्यों कनाडा इससे महरूम रहे? और यहाँ आईसीसी ने बड़ा स्मार्टली किया कि 2 ऐसी टीमें उनका ओपनर करा दिया है जो कि सबके लिए एक सरप्राइज़ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये अच्छा साइन है क्योंकि आपके पास जब ऐसी टीमें खेलती हैं और ये फॉर्मेट बहुत सूटेबल है ऐसे यंग प्लेयर्स के लिए और उन प्लेयर्स के लिए जो बाजू का समझते हैं कि शायद हम 50 ओवर क्रिकेट नहीं खेल सकते या हमारी कंट्री जो वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल, जो कि अल्टीमेट है हमारे लिए. हम समझते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज़ अल्टीमेट जो है ना ये फॉर्मेट है. लेकिन आप जब जिस तरह की T20 की जो प्रमोशन हो रही है और T20 जिस तरह पॉपुलर हो रही है तो ये अमेजिंग है कि ऐसी टीमें खेलें. और क्या ही बात हो, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि क्राउड हो. और सिर्फ ये हम बात इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, हम न्यूजीलैंड इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, हम ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम उस हर मैच की बात कर रहे हैं जो कि जब T20 फॉर्मेट पे हो तो क्राउड हो और उसको बिल्कुल ऐसे चेयर हो जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा हो. बिल्कुल. अभी हमने बात की ग्रोथ की कि कितनी ग्लोबल हो गई है क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट में इतनी बात होती है हाई स्कोरिंग गेम्स की, इंटेंट की, स्ट्राइक रेट की. इस वर्ल्ड कप से आपको क्या उम्मीदें हैं कि बिकॉज सब ये अभी सोच भी रहे होंगे कि क्या हाई स्कोरिंग गेम्स हमें देखने को मिलेंगे. ऑफ कोर्स हमने आईपीएल में भी देखा कि ये ट्रेंड जो है ये अपवर्ड्स ही जा रहा है. 250 आराम से हर मैच में हो रहा है, चेस भी हो रहा है. बट आपके नज़र में कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए पिचेस के बारे में, क्योंकि हमें अभी इतना नहीं पता, व्हाट डू यू थिंक ये किस तरफ टिल्ट करेगा? बैटर्स को ज़्यादा फेवर करेगा या बॉलर्स को? बैलेंस है बिल्कुल. क्योंकि देखिए बाज़ बैटर पे हम समझते हैं कि शायद T20 बैटर्स का गेम है, लेकिन ऑपोजिट भी हो जाता है जब आप स्ट्राइक रेट्स माइंड में होता है और रोटेशन जो हो रही होती है तो वो भी आप पे प्रेशर डालता है. तो मेरे ख्याल से ये बैलेंस है. लेकिन एंड में वही बात है क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस हैं, बाज़ औक़ात ग्राउंड भी बाउंड्रीज भी छोटी कर देते हैं तो बैट्समैन को फेवर होता है. और अगर मैं आप एक मॉडर्न एरा की बात करें तो मार्टिन गप्टिल यहाँ बैठे हुए, जब इन्होंने 250 किया उस वक्त और 200 रन किए तो कोई सोच भी नहीं था कि वनडे में 200 रन हो सकते हैं. और फिर इसी तरह T20 की हम बात करें तो कोई सोचता नहीं था कि T20 में भी 100 कोई करेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे मैच में 100 हो रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल से ये एक्सपेक्टेशन यही है कि ज़्यादा रन होने चाहिए, ज़्यादा रन होंगे और ज़्यादा रन होने भी चाहिए क्योंकि क्राउड जब आता है तो क्राउड ये चाहता है कि वो कोई 200 रन तक हो. मेक श्योर कि जो 200 रन हो ताकि जो आप इतना मैच देखने आते हो तो उसकी जो है आपको पूरा फील होना चाहिए. और मेरे ख्याल से टीमें वही इस वक्त सक्सेसफुल होंगी जो कि माइंड सेट लेके आएंगी कि हमने किसी एक प्लेयर पे नहीं खेलना है,
हमने मूव फॉरवर्ड करना है और हमने वो जो हमारा रन रेट जो हमें रिक्वायर है या हम जो सेट कर रहे हैं वो नीचे नहीं है। जहाँ आप रिकवरी पे आएंगे तो फिर आपको जो है आप पीछे हो जाएंगे और अब आप मैच में रहोगे नहीं। तो मेक श्योर करें कि आप मोमेंटम को बना के रखें, जो मोमेंटम आपकी फेवर की तरफ है, और अगर दूसरी टीम की तरफ फेवर में है तो मेक श्योर करें उसको ब्रेक करें। और ये बस ये मेक और ब्रेक का ही है, जो मेक और ब्रेक ऑन द स्पॉट करेगा वो टीम को फ़ायदा होगा। और ये अच्छा साइन है कि कनाडा और यूएस खेल रही है, जो कि एक अच्छी मार्केट्स हैं और लोग चाहते हैं, हम सब चाहते हैं, क्योंकि हम सब जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मोहम्मद हफीज़ की बात करूँ, मार्टिन गप्टिल की, मैं खुद अभी यूएस से होकर आ रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है प्लेयर्स के लिए, हम जैसे क्रिकेटर्स के लिए जो रिटायर हों और जो करंट क्रिकेटर्स खेलें उनके लिए बहुत अच्छी मार्केट्स हैं। तो मेक श्योर करें कि अच्छे मैच हों और अच्छी स्पिरिट में मैच हों। Bilkul. Talking about the balance here, Erin, you know what to expect from this World Cup. I picked up some of that. My Urdu is getting better. I heard maybe 40 grounds, which are lots of sixes, 250. We've just seen boundaries. Smaller boundaries. But we have just seen in recent editions of T20 leagues all over the world, strike rates are going through the roof. And you've got guys coming straight off these comps into this T20 World Cup. Guppy, do you think we've gone up another level in terms of our strike rates now? Batters have innovated to the point of just ridiculous nature. You know, we've seen 250 plus scores seen in T20 matches. Do you think the conditions in Dallas, knowing what you know of the ground, what are you expecting from tomorrow? You know, what do you know about Dallas? What can you tell us from a batter's perspective? Well, from playing there in the MLC last year, it was quite batter friendly to start with. You know, I think it was the second game of the tournament. There was a score over 200 on a wicket that I only had. There was the second game ever on it. You know, so it was a brand new stadium, redeveloped baseball stadium into a cricket ground, and they'd done a really good job and actually played a lot better than what a lot of people thought. I think, especially me myself. So. I was a little bit worried about how I was going to play, but no, it actually played really, really well. Some big scores there. The ground's, it's an okay size. I wouldn't say it's big and I wouldn't say it's small. It's an okay size, but it's still gettable to hit big sixes there, and there's a prevailing wind as well. So, you know, if you can use that wind to your advantage as a batter, then you know, anything can happen. It sounds pretty crazy, and I think hopefully one for the bowlers to really consider before they, you know, take down a wicket of a task which you know big scores have been scored on. But you know, it might be the early hours of the morning here in Pakistan, but the T20 World Cup is just about to get started. Of course, every single game will be screened across the screens of PTV. So this is the place to watch the World Cup. This has been just the first little snippet of Game On Hey, Roha. And of course our wonderful panel. We're going to be with you the entire way through. So do join us for the game later on today. Plus we'll have Game 1 Hey from 5 p.m. in the lead up to the West Indies taking on Papua New Guinea, the second game of the day tomorrow. I think we should say goodnight, guys, and get a little bit of rest. It's going to be a very long and explosive T20 World Cup. That's all for now from all of us, but we'll see you all later on today as the T20 World Cup ICC edition for 2024 gets underway.